एंड कॉन्फिडेंस कोच मैम, थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे आज के लिए, तो चाहिए, बताओ थोड़ा टिप्स नहीं, दो। पहले तो आप थोड़ा कूल हो जाओ. कॉन्फिडेंस इज नॉट समथिंग दैट यू आर born with. ओके Confidence is a muscle which you can train, right? ओके People think that confident people are born confident, but it's not like that. So what is confidence coaching? Confidence coaching is like changing your mindset, ओके right? There are various myths regarding confidence कि कॉन्फिडेंट लोग हमेशा कॉन्फिडेंट होते हैं. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. या कॉन्फिडेंट लोग आर बॉर्न कॉन्फिडेंट. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. Okay. इट इज समथिंग लाइक confident people are not confident everywhere. Like I can be confident in speaking, I'm not confident in driving on highway. That I have to learn. Okay. Right? And it's like I'm driving from last 25 years, but Okay. still I'm not confident in driving on highway. मतलब एक झिझक है आप में. हाँ, till the time, but today I am confident because I learned that. Every time I was postponing this, till the time I actually did it and I became confident. Okay. Right? Confidence only comes by engagement, by actually taking an action. बट मैम मैं इससे अगर क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँ तो मेरा तो मेन क्वेश्चन अपने रिलेटेड भी, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं कि जैसे लुक्स को लेके किसी के फेस पे पिंपल्स हो सकते हैं, कोई डार्क स्किन हो सकती है, किसी के बाल नहीं हो सकते. काफ़ी लोग हैं जिनको लगता है कि उनके फेशियल या फिजिकल अपीयरेंस की वजह से कॉन्फिडेंस होता ही नहीं उनमें. तो वो कैसे कॉन्फिडेंट रहे, मतलब वो बने कैसे कॉन्फिडेंट? See, confidence, unless and until you start loving yourself, start believing in yourself, and stop validating from others. ठीक है. कॉन्फिडेंस का मतलब if someone is fat or someone has bad skin, it's not that you cannot improve that. Confidence is not just कि भाई आपने उसको ले लिया, ये तो मेरे अंदर है, और that is something not confident. Just accepting yourself and still you can change that. Still okay. you can improve that. Just like when you go to a party, आप कितने भी सुंदर हो, even Aishwarya Rai put makeup. Right? Because you always want to look your best version, but she accepts herself. So everybody has flaws. Like अगर आपको निक व्यूजिक करके एक बहुत फेमस मोटिवेशनल स्पीकर है. Okay. He is born with no limbs. ना उनके आर्म है, ना उनके या legs है, right? मैंने शेयर भी करा था उनका एक बार कंटेंट में देख रखा हूँ. But he has become such a famous motivational speaker, but because he accepts himself. So confidence has nothing to do with your looks or with your wealth or with whatever you want to say. Confidence is accepting yourself and continuously improving yourself. So ma'am, you are saying that building confidence is like training a muscle. Right. तो कौन सी ट्रेनिंग से ट्रिक्स हो सकते हैं जैसे बंदा अपना कॉन्फिडेंस या इंक्रीज कर सके उसको? See, there are a lot of tricks, right? Okay. But I would say only one thing, which is the father of all principles. Clarity always comes from engagement. Action. Engagement like Action. how? Action. Like you have to take teeny meeny steps every single day. Suppose I want to learn cooking. Very simple example. Okay. Right? I want to learn cooking. I am not confident in cooking at all. But does that mean I'm not confident? No. I am confident in some other areas of life. I am not confident in cooking. Okay. So what do I have to do? First, I have to try. I have to take an action. If I'm just overthinking every single day, I have to learn cooking, I have to learn cooking, I have to learn. Will I learn cooking? No. It is something like if you want to learn swimming, you have to dive into water. या है ना? आप किताबें पढ़ने से तो you cannot learn swimming. डूबना तो पड़ेगा एक बारी. डूबना I won't say, पानी में तो जाना पड़ेगा मतलब. So it's like आपको जो कुछ भी सीखना. I'm sure the first time you did this podcast, आप में वो confidence नहीं होगा शायद जो आपके अंदर आज ये confidence है. मैं दिखाना भी नहीं चाहूँगा अपना पहला पॉडकास्ट आपको. नहीं, it's okay. Everybody learns from their experiences. Yeah. First time when I did my voiceover, believe me, I was not able to read the script because मेरी screen पे कुछ डब्बे आ रहे थे. Okay. ठीक है? And I was like, how am I supposed to do the voiceover? I cannot even see the script. But I then realized that the script was in Hindi and my computer didn't have the ब्रेल लिपि जो हमारी Okay, हिंदी की स्क्रिप्ट okay. होती है, वो देवनागरी स्क्रिप्ट, वो मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड ही नहीं थी. सो दैट That's वाज why द रीजन आई वाज गेटिंग दैट डब्बे. Okay. बट व्हेन आई tried, I was not confident, of course, because मुझे पढ़ना ही नहीं आ रहा था, तो मैं पढ़ती कैसे. बट व्हेन आई डिस्कवर्ड दैट, उस पर काम करा, वो डाउनलोड करा, सो डू यू थिंक उसके बाद में मुझे कभी दिक्कत आई होगी? नो. सो
it's like you develop your muscle, ओके, right? थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।